Hello, everybody. This is going to be a good video for everybody who's going to prepare or appear for any kind of interview, be it related to engineering jobs or any kind of interview where you have to face a stranger who is known as interviewer. हम लोग काफ़ी धारणा होती है हमारे मन में कि इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू मुझे फेल कर देगा, बट एक्चुअली इंटरव्यू सेटअप इज़ नॉट मेंट फॉर दैट. तो अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे समझना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि इसको पूरा वीडियो के अंत तक देखें. इंटरव्यू किया गया है जिसमें है कि मैंने सिर्फ इंटरव्यू के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को दिखाया है, और साथ ही साथ उसका रिस्पांस क्या होता है, उसके लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, उस बारे में डिटेल में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया है. सो इफ़ यू see the entire video, I'm sure a lot of doubts that you have with respect to interview that will get clarified. Thank you so much. There is a standard set of questions that is asked in the beginning to set the context, and then based on the expertise, people go into minute details. Okay, so uh, we will do your interview keeping that in mind. Now, let's start with our two-word thing first. You can share your 2 words that you have learned in last 1 week. I mean, you would have learned 14, 15 words, but out of that, you might want to share any 2 words. Or sir, you can judge me or sorry, Hmm. like Yeah, sure, sure. No, that's general what. interview kind purpose because I hadn't faced any this type of interview. No, that's why I'm saying to you. Correct. No, no, I will certainly do that. See, that's what we do as part of mock interview. So I'll Hmm. ask you some questions. I will wait for you to respond to those questions, Yes, and sir. once we conduct that, then I will give you feedback on how was your response, how were you articulating your point of view, how are you presenting, how are you using or choosing right words for for conveying what you know versus what you don't know, how you were answering the questions which are tougher, right? How you were Yes, sir. passing through the Basic questions. questions are same in every field, Yeah, and only technical questions are different. Like correct, for teaching job interview, that is different. Only right, for technical field. Okay, sir. correct, correct. Okay, so you can start with your 2 words. You can first share your 2 words, and then we will go to the interview. Okay, sir. I'm expecting that more students come today, but no one is there because I chosen some different words. Na, that's why, like Pinky ma'am or the other students also. But let it Right. be. Yeah, correct. Okay, sir. So my first word is ecstatic. Hmm. Ecstatic means अति उत्साहित होना. Hmm. Like in general English, people say I am very, very, very happy. So it is wrong. This Hmm. sentence is wrong. Very, very, very. This is not correct. We can say in a single word like ecstatic. Hmm. And the sentence related this word are Hmm. I am super ecstatic about this meeting. Hmm. Shreya is feeling ecstatic of her result in research. Hmm. It was fantastic conversation and we are feeling ecstatic. Hmm. The show was really beautiful Hmm. and the audience was so ecstatic. Hmm. Very nice. The crowds were ecstatic. The, um, the crowds were ecstatic to see a glimpse of Shah Rukh Khan. Hmm. In this sentence, I use two words, ecstatic Hmm. and glimpse. Glimpse. Yep. Yes, sir. And it was ecstatic to see my name on leaderboard. Hmm. Very Um, nice. we are ecstatic about welcoming a new addition to our family. Hmm. Okay, sir, that's all Yeah. So about देखिए word ecstatic.
हाँ, so some feedback quickly here, okay? तो आपका जो sentences था, you used the word ecstatic in a very nice way. आपका जो sentences formation था, जो उसका meaning था, that was coming out very clearly. You were using ecstatic in place of excited because this is the next degree of excitement. ठीक है? Yes, sir. तो आपने sentences बहुत सही से use किया, and I think I could not find much of a flaws or mistake in what you did. Only one thing I observed was you were saying, you said the crowds were excited to see a glimpse of Shahrukh Khan. तो यहाँ पे देखने का चीज ये है कि क्राउड जो है ना, वी नेवर से क्राउड्स, क्राउड इटसेल्फ इज अ प्लूरल, ठीक है? तो आप क्राउड्स नहीं बोलेंगे, आप सीधा क्राउड बोलेंगे, द क्राउड। और वहां पे वेयर नहीं बोलेंगे क्योंकि क्राउड ऐसे इट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट on itself it is no treated as a singular thing। और ये ecstatic का एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, ecstatic, देखिए कैसे बोलता है अंग्रेज लोग, ecstatic। तो ecstatic, x x e c जो है x हो जाता है, वो ecstatic। Yes, sir. Pronunciation is like X. हाँ, प्रोनाउंसिएशन है हाँ, x, right? is X, ecstatic, but the spelling is e EC. c, X. correct, correct, Static. all right। And my second word is daunting. daunting, difficult। Yes, sir. Daunting means kathin या difficult. hmm. And the sentence are, sir, in this sentences are या sentence are? sentences are Sentences are, hmm. because you create like very confusing situation on my mind that crowd is suitable for her or not. That's why. मेरी वजह से नहीं है, मैं तो हिंदी भाषी आदमी हूँ, ये तो अंग्रेजी का महिमा है एक्चुअली। यस सर, फिर वो दिमाग में आ रहा है कि फिर तो सेंटेंसेस नहीं के साथ आर भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आपका जो सोचना है दैट इज परफेक्टली फाइन। कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस है, जैसे क्राउड एक वर्ड है जिसमें इज लग रहा है, आर नहीं लग रहा है, या क्राउड एक एक वर्ड है सिर्फ, ठीक है, इतना मान के चलिए, बाकी सब जगह पे आपका जो जो बेसिक थंब रूल है वही रहेगा। अगर कुछ दूसरा एक्सेप्शन मिलता है तो देन वी विल जस्ट मेमोराइज दैट पार्ट, अदरवाइज अपना बेसिक थंब रूल सेम रहेगा, ठीक है। यस सर, यस सर, हम्म, sure sure. So my sentences are, हम्म, it is um, it is a quite daunting task for me. हम्म, Mm, technical challenges are more daunting. हम्म, Um, life seems like daunting with no joy or love in it. हम्म। Today I am feeling daunting while I am giving speech. हम्म। देखिए, तो इसमें एक चीज है, आपका लास्ट सेंटेंस जो है, आप डाउंटिंग के साथ में बहुत सही जा रहे थे। इट्स अ daunting task, a situation has made my life daunting, so लेकिन यहाँ पे टुडे आई एम फीलिंग daunting जो है वो थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है। यस सर, मेरा कहने का ये मतलब है कि while I am delivered my speech, हम्म, सो उस टाइम पे मैं बहुत कठिनाई महसूस कर रही थी स्पीच देते वक्त। हाँ, तो इस पर्पस में मैंने बोला आई एम फीलिंग डॉन्टिंग। ओके, आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो सही बैठ रहा है कि नहीं, मतलब क्योंकि यस सर। आई हैड अ वेरी डांट, इसको daunting को एक्चुअली देखेंगे ना, एडजेक्टिव जैसा यूज करते हैं कि आपका वर्ब के साथ में इसको चिपकाना है एक्चुअली, टू टू ऐड मोर पावर टू इट। तो आई हैड अ daunting फीलिंग while delivering this speech। यस आप सर, इट इज राइट। हाँ, अगर आप बोलेंगे आई वाज फीलिंग daunting, तो थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा वो नहीं था, उसका रिदम गड़बड़ा जा रहा है। तो यस यू विल सर। से आई हैड अ daunting फीलिंग while delivering a speech।
Yes, sir. Okay, So, sir, that's all for that's all. today. Okay. अब देखते हैं वीरेंद्र जी क्या बोलना चाह रहे हैं. Do you want to unmute yourself, वीरेंद्र जी? आप I म्यूट think पे. he is joining by mistake. हाँ नहीं, मतलब जो भी ज्वाइन करेंगे उनको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा, तो इसलिए that's why I'm just trying to know who is the participant in this meeting and how we can participate effectively. And I think maybe she is Pinky, ma'am. I think so because she has so many ideas. Okay. हाँ तो जो भी है मतलब अनम्यूट कर दीजिए भाई. गुड इवनिंग सर. गुड Yes, इवनिंग. sir. देखिए आप, I'm saying that. आपने आज एक मतलब झटका दिया ना सबको. मुझे लगा कि मेरे नाम से ही कोई ज्वाइन किया है. मैं वीरेंद्र कुमार हूँ, यहाँ पे वीरेंद्र कुमार हैं. ओके. चलिए पिंकी जी, तो आप शेयर कीजिए आपका 2 वर्ड्स. माय फर्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंट. बेनेवोलेंट. ओके. Yes, sir. Meaning is kind and genius person. ओके. Every kind people are benevolent. And a priest is a benevolent person because they always suggest to people right things. Okay. Poor people also benevolent person because they face lot of problems and then after live life themselves. Okay. Salman Khan is genius person. Salman Khan is benevolent person. Benevolent. ओके. देखिए बेनेवोलेंट जो है ना, बेनेवोलेंट का पहले स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सुन लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम गलत प्रोनाउंस करें उसको. यस सर. बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट. तो जो ओ है ना उसमें, बेनेवोलेंट का स्पेलिंग है BENE क्या था, BOLENT. हाँ, बेनेवलेंट. वो जो है थोड़ा छुप जाता है प्रोनाउंसिएशन के टाइम में. बेनेवलेंट. बेनेवलेंट. तो बेनेवलेंट. तो देखिए बेनेवलेंट तो ऐसा है कि इट्स अ वर्ड दैट मींस somebody who is very nice. You Yes, are sir. benevolent, I am benevolent, they are benevolent, elderly people are benevolent, Salman Khan is benevolent. ठीक है. नरेंद्र मोदी इज बेनेवोलेंट, लालू यादव इज बेनेवोलेंट. कोई भी कुछ भी हो सकता है, राइट. किसी को नाम पे कुछ भी चिपका सकते हैं आप. यू आर जस्ट सेइंग समबडी इज वेरी गुड एंड नाइस. तो एकदम एकदम सिंपल. देखिए अपना पर्पस तो है कि वर्ड पकड़ में आना चाहिए. तो जब वर्ड का प्रैक्टिस करना है तो आपको बहुत मुश्किल सेंटेंस की ओर जोर मत लगाइए शुरू में, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आप सेंटेंस सोचने में फंस जाएंगे. यस सर. तो एकदम जो बच्चों वाला तरीका होता है ना, आई एम बेनेवोलेंट, ही इज बेनेवोलेंट, शी इज बेनेवोलेंट, राम इज बेनेवोलेंट, माय टीचर इज नॉट बेनेवोलेंट. तो वैसे वैसे क्या होगा कि वो वर्ड पकड़ा जाएगा फिर, है ना. तो चलिए, आपने अच्छा वर्ड चूज किया, दूसरे वर्ड पे आइए. बेनेवोलेंट. Sir, my second word is eloquent. But Eloquent. sir, yes sir, eloquent. But sir, it is very tough for me. Could you please suggest me what is the meaning? देखिए Fluent any communications. हाँ, तो eloquent Like that. देखिए पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सुनिए. eloquent.
Eloquent. Eloquent. मतलब Eloquent. somebody who is very fluent, somebody who is very convincing with his or her thought process. ठीक है. We no, I met a person who was able to convince everybody with his eloquent speech. So please spell it. Eloquent. 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 And the meaning is fluently. Somebody who is very fluent, very convincing, very very thoughtful. मतलब, so there are two types of people. Okay, one is talkative, one is eloquent. Talkative person can go wrong because that person is not being thoughtful while sharing something. Eloquent person is somebody who is always very thoughtful, mindful of what he or she is saying. They supplement their thoughts with lot of ideas, lot of convincing power, lot of conviction. Conviction is a word. इसका मतलब होता है कि Attractive also, sir. Attractive also. attractive. हाँ ना. अब Little bit. हो सकता है. तो देखिए क्या होता है ना कि we don't like people because of their looks. We like people because of their personality. Okay, so you will find that there are people who are not very good looking, but their personality is so nice. They are so so easy to to mingle with. They are so easy going. They are so nice with everybody else that people like them. Okay, so Swaroop, you can hear us? I believe you will say yes. So coming back to Pinky ji, so you talked Yes, sir. about benevolent, Eloquent. and then you talked about eloquent. Yes, Eloquent sir. again means somebody who is very fluent, who is very uh, mindful and thoughtful while talking. He used good techniques for convincing people. So that is what is called eloquent. Okay. तो आप यहाँ पे eloquent में भी वैसे यूज करेंगे. He is eloquent, she is eloquent, they are eloquent, my teacher is eloquent. And then if you want to go to next level, you will say my what do you call, my mentor or my teacher, I find him or her very eloquent because of the information he or she gives while talking. Eloquent speeches are more meaningful or more impactful because it gives you a lot of information. ठीक है. तो वैसे आप Okay, sir. मतलब पहले आई मी ही शी यू दे देम पे यू सेंटेंस बना लेंगे एंड देन यू कैन ऐड मोर मसाला टू इट. Okay, sir. Hey Swaroop, can you hear us now? Yes, sir, you are audible this time, sir. Okay, wonderful. So you joined a little late, but Yes, sir. Actually, our end semester exam is going on, so that's why yeah, I I have know, to I study knew a that. lot. So we'll keep it as quick as we can. So we have used two words each. Okay, so Anjali ji has shared two words. Pinky ji has shared two words. I don't want to do two words things with you and Abhishek today because I know you But guys. sir, I did not make any sentence. So My you, second one eloquent. so you go ahead and make your sentences. Have Abhishek. Good Okay, evening, sir. sir. May I So speak, sir? yeah, please go ahead. Okay. My teacher is very eloquent. Very eloquent. Hmm. Eloquent. Okay. And one of my friend who is very eloquent. I'm Hmm. very eloquent. Hmm. My children are also very eloquent. Hmm. And enough, sir. Okay. Okay. My ठीक है. हाँ बोलिए. my teacher is very eloquent because whenever he taught me, taught आएगा sir, taught me. Whenever he Whenever taught he me.
हाँ चलेगा. Okay, his speaking and his सर उसको क्या कहेंगे जो उनके वर्ड्स होते हैं हाँ तो लाइक आप दैट. बोलेंगे I found my teacher very eloquent because the way he or she explains or makes us understand things. Okay, sir. I found whenever he taught me, I found his words is very meaningful, Correct. and his words is very meaningful, and I grab immediately. I understood it immediately. Huh. Okay. Very nice. That is enough, sir. Okay. तो चलिए तो now the question that I have for Abhishek and Swaroop is कि आप लोग दोनों को लेट से आने के लिए एक पनिशमेंट है. पनिशमेंट ये है कि Sir, you we have guys I know you guys have your NSM going on. exam. हाँ. So Sir, last week my phone got damaged. That's why I am not able to join the class. not a problem. No, I was just pulling your leg. That's okay. So what I was saying was आप लोग दोनों को 2 वर्ड शेयर करने के लिए नहीं दूंगा. What I was thinking was कि we will do one mock interview. Okay. Not for both of you. Or what we can do is I will do mock interview for both of you, Swaroop and Abhishek. आज के लिए अंजलि जी and Pinky ji, you both can observe. Okay. So I'll ask a question and one of you will respond first, and that person will pause, then second person will respond. Okay. तो वैसा एक mock interview करते हैं, and then we'll ask Anjali ji and Pinky ji to suggest what was their feedback, if they found something that could have been done better, and then on the top of that I will give my feedback. Okay. So we'll do it like a quick fire, 5 questions, so that we can do it within the time, so that you guys don't get late for your subsequent exams and all. Okay. And if you guys are hard pressed for time, let me know. We can do it later also. No, sir, it's okay. It's We okay. have. I joined the class. That's why I want to do something different. That's why today. Okay. Exam is preparation is going on. It is okay now. Okay. ठीक है. So we'll Not such try a to problem. finish this in next 20-25 minutes. So fine. Okay, sir. So Abhishek and Swaroop, are you guys ready? And Anjali ji and Pinky ji, I would suggest you guys to keep a notebook and a pen with you, so that when you're observing something, take a note of that. Hindi में English में जैसे भी note करना है कर लीजिए, so that you don't have to struggle to find out or recall what was discussed. ठीक है? All right. So it's a simultaneous interview happening for Swaroop and Abhishek together. So there'll be one question and there'll be 2 answers for each of the questions. Likewise, we'll have 4-5 questions. All right. So let's start. So welcome to this exercise, Swaroop and Abhishek. Thanks for applying for this job. We wanted to have a quick touch base and understand what is your readiness or willingness for the job for which I have an opening. So let's get started. So Abhishek and Swaroop, why don't you spend next 2 minutes giving a brief summary of your or giving a brief introduction of yourself. So maybe Abhishek, you can start. Start with a brief introduction. Yep. Yes, sir. So starting from myself, my name is Abhishek. I am currently pursuing my BTech degree from National Institute of Advanced Manufacturing Technology in Metallurgy and Materials Engineering. Right now, I am in final year, and I am looking for a job in your company. That's what I have to tell you. So, like it is an interview. That's why you. Mm-hmm. Okay, sir. So my key hobbies are playing chess and Rubik cubes. My personal interest for the topic in which I am selecting is heat treatment, iron making. This type of subjects I am interested. My strength is adaptability
Hmm. Pressure handling. Mhm. My weakness is I'm not recall at the moment. Thank you, sir. Okay, all right. Swaroop, go ahead. So first of all, sir, thank you for giving me a chance to uh, for introduction in front of you. So myself, Swaroop Kumar, and I hail from Kharagpur, West Bengal. Currently, I am pursuing BTech in National Institute of Advanced Manufacturing Technology, specialized in metallurgy and material science and engineering. So currently, I am in my final year. So I am looking for a job in your company uh, because my vision perfectly aligns with your company's goal. Uh, so that's why I am looking for a job, and I belong to a very nuclear family, and my strength are that I can solve any problem very quickly and easily. So problem solving skills, and my biggest weakness is that I could not say no to people easily, and I am working upon my communication skill also. Okay, That's about me. all right. Okay. So let's do one thing. I have a lot of feedback for you both. So what I'll do is let's do three questions maybe, and then we'll kind of do a double click on all the answers that you guys gave and how you can make it more impressive, when you actually go for the real interview. Okay. So this is the first one. Now the second question is this. So Abhishek and Swaroop, I heard you. Now I do have a lot of openings in my company, uh, but I'm still struggling to figure out where do I fit you, in which role, and why not somebody else. So I heard Abhishek you talking about no heat treatment, iron making, and all. That is your core strength. But Yes, I'm sir. not looking for somebody who will actually do it. Right? You with you Okay. coming with a bachelor degree, you'll be playing a much higher role if I if I Yes, look sir. at the hierarchy in my organization. So I would want to understand what value you bring to the table. Why should I hire you, and what role would be more suitable for you? I want to hear from you. Same way, Swaroop, I heard you belonging from a nuclear family, being very focused, working on your communication skill. But I'm still trying to draw the relevance between your experience skill versus the requirement that I have. So why don't you take a minute or two to explain me why should I hire you guys? Okay. So whoever So wants to could I start start first? first, sir? Okay, Swaroop, you can go ahead. So truth to be told, I think I have the sufficient and enough skill that perfectly align with your company's vision. So, and I think that I'm since from the beginning of my college, so I am very good in problem solving skill. So that actually perfect for this post. So I think that's why you should hire me. Okay. Is that it, Swaroop, or you want to add something more before I go to Abhishek? Okay, Abhishek, over to you. Thank you so much, sir. Sir, apart from my core subject knowledge, I am very keen interested in management also, and I want to do the work which are dynamic in nature. Like I am not that type of person. Even my personality is not such type of person. Is that I want to stick in just one job. I want to Hmm. do some field job also, some core job also, some data interpretation. Look like um, some uh, to extract data from any somewhere from people and to analyze that what is the data saying and to present it to you and apart from this I also interested in public relationship Mm-hmm. what our company will offer to the customers. This Mm-hmm. type of job I will easily can do. Okay. Okay. Now the third questions. I'm digging deeper into what you guys said. So Swaroop, you said that you are prepared and you are aligned to the company's vision.
So that is still a subjective answer. I want you to kind of give me a more specific, example of uh, why do you feel that it is aligned, your skill is aligned to my, my company's vision. Okay. Sir, I mean, actually, I am good in the core subject like iron making and steel making. So Mhm. I think that in your company's uh, position on role, so there, I mean, uh, 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 so in that case, there is mainly the thing that I mean, how to handle blast furnace or how to handle steel making. So Mhm. at that code domain area, I think I have sufficient knowledge so that I could handle. So that's it. So my career and focus goals will perfectly align with your company's vision. Okay. So, Swaroop, a counter question to what you said. Your knowledge in the field of iron and steel making, what you know is based on what you have studied in last 4 years. I have people working in my company doing the same thing for last 25 years. So they will have a much more deeper practical understanding of things than anybody can acquire in 3 to 4 years of study. So that is where I'm still trying to draw a line or not draw interpretation based on what you said to see where you're exactly adding value to the the current ecosystem. So actually, I mean, I am a very quick learner and Mm-hmm. I am very good at management skill. Mm-hmm. So I could learn any kind of topic or any kind of problem very easily, and then I try to solve this. Okay. So that's why. So I think that I could apply for this role. Okay. Wonderful. Abhishek. Yes, sir. So you know the question, right? I heard you being very flexible. Knowing a lot of things with respect to the data analysis and stuff like that. You're interested in public relations also, but Yes, sir. uh, give me a more specific example of what is that immediate value that you will bring to the company by me hiring you. The immediate value I will add to the company is the one thing you have to not to taught me not to uh, uh, not to taught me is that data interpretation Mhm. is the thing, the work which you have to do in files, that you have to not teach me. I will uh, completely self-sufficient learner in this. So Mhm. that's the thing immediately I will add to the Yeah. company in this value. Okay. Apart from this, I am very good at managing things and in very less resources, Mhm. I will give you the best result. Okay. That's what I think. Very nice. So, देखिए, uh, I will share a lot of interesting insights. Okay, but before I start, I want Anjali ji and Pinky ji to share their point of view. आप लोग as a as a person from outside, uh, what is that you observed? देखिए यहाँ पे all that we learn is based on what we observe, right? तो आप लोग यहाँ पे भले ही आप लोग आयरन मेकिंग स्टील मेकिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको लाइफ में, लेकिन जो है there are some common observation that we can always make based on what we hear people talking. तो अंजलि जी, पिंकी जी, एक एक करके थोड़ा 2 2 मिनट में सुनाइए आप लोग बिफोर आई गेट स्टार्टेड विथ लॉट ऑफ लोडेड स्टफ. और शर्माने का नहीं है कुछ भी यार, किसी को बुरा भी नहीं मानना है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, राइट? बिकॉज वट एवर वी ऑब्जर्व, वट एवर वी शेयर, दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस in a more constructive way. Sir, I don't understand much what you are asking because you all are related to this field. So This is not I any didn't. technical interview, Anjali. Uh, This is just an common interview, just like HR interview. Mostly questions sir has asked is nothing about our Sir, field. no, no, like you are saying that you are
you are interested in you are using na like heating something like that. हाँ. So sir counters you that I am not hiring that such a related field. So I didn't understand Okay. that नहीं, thing. देखिए आपको I अभी will. तो I, हाँ. But sorry, what हाँ. I sir. I noticed, just. sir, please listen me. What I noticed, the हम्म. one phrase what Swaroop used, and I am, मतलब मैं तब से वही सर्च कर रही थी. That हम्म. truth to be told. हम्म. हाँ. तो I don't know the meaning of सच्चाई से truth to be सामना. told. ट्रूथ टू बी टोल्ड मतलब देखिए, ट्रूथ मतलब सच्चाई, टू बी टोल्ड मतलब बोलने लायक बात, जो अगर मैं कुछ बोल सकता हूँ तो, या सच्चाई सच्चाई फैक्ट शेयर करना, दैट्स जस्ट अ या वे फिर ऑफ honestly I say that कि अगर उसकी जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, and what I searched that there is no any phrase, there is not any phrase of truth to be told if the truth be told. So truth to be told, I think it's right and proper. Not truth be told, truth to be told. So this is So I phrase truth suppose to be told or something else. no, it's not a phrase. I mean, in It's not a phrase. common Okay. sentence, it is told like this. I mean, truth to be told को ऐसे बोला जाए ना कि very honest opinion about something. Yes, sir. Like honestly I say that. हाँ, Honestly. honestly I say that. वो अलग अलग स्टाइल है, मतलब आप देखें ना, it's about how creatively you're putting the words together to make a meaning, and there are a lot of things. But if I heard something new ना, तो फिर मैं उसको बहुत ज्यादा सर्च करती हूँ हर एंगल से. that is क्योंकि okay. सर राइट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए. करेक्ट करेक्ट. नहीं तो एक काम करते हैं, लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट अगेन. तो यहाँ पे आप देखेंगे इस इंटरव्यू में देयर वर 3 पार्ट्स. One was the introduction. That happens regardless of what type of interview you are going for. That is your first opportunity to impress the person sitting next to you. ठीक है? That one we did. Then I said कि okay ठीक है, मेरे पास requirement है, I'm here to hire, but tell me why should I hire you? तो पहले इंट्रोडक्शन में होता ना कि आपने बताया कि मेरा ये ट्रेड्स है, क्वालिटी है, नॉलेज है, स्किल है. तो उसमें अगर आपने इम्प्रेस नहीं किया या आपने इम्प्रेस किया, कुछ डेटा पॉइंट दिया, तो फिर इंटरव्यू पूछता है अच्छा ये बताओ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप कहाँ पे फिट बैठते हो. ठीक है, वो दूसरा पार्ट हो गया. और देन नेक्स्ट थिंग वाज लाइक कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्कशन कि ठीक है, नाउ यू आर गिविंग मी सम मोर डेटा पॉइंट. नॉट यू टेल मी इवन इफ यू टोल्ड 100 गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर ब्रिंगिंग. क्योंकि मेरी कंपनी तो चल रही है, स्टील या आयरन जो भी बन रहा है. आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाओगे जॉब के लिए, तो वहाँ भी हॉस्पिटल तो चल रहा है ना, मतलब ऐसा आपके जाने के बाद हॉस्पिटल खुले तो है नहीं, या स्कूल में जाते हो तो स्कूल भी तो चल रहा है. तो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग टू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट सो दैट आई शुड लुक फॉर यू, नॉट समबडी एल्स. तो ये 3 पार्ट था इंटरव्यू का. तो अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड बाय पीपल. अब ये बताइए कि तीनों क्वेश्चन पे स्वरूप का या अभिषेक का रिस्पांस किस तरह का था. I just want a very indifferent opinion, okay? Because I myself an interviewer. I've been hiring people for more than 15 years now. So I'll behave like a professional interviewer. लेकिन आप लोग का क्या ओपिनियन था वो मैं जानना चाहता हूँ. अच्छा ठीक है, अभी अगर आइडिया नहीं आ रहा हो तो सुन लीजिए, तब आप लोग को शायद थोड़ा सा कुछ दूसरा व्यूज आएंगे. ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, your introduction is the most impactful part of any interview, okay? That is when Yes, sir. the interviewer builds his or her opinion about you. तो आपको जो अपना इंट्रोडक्शन के लिए जाना है, जो भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, यू हैव टू मेक योर पावर पैक्ड इंट्रोडक्शन. 5 लाइन का हो, 7 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, इट हैज टू बी अ पावर पैक्ड थिंग. व्हाट इट विल कंटेन इज अ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, एंड देन what is that you do which is so very important for the person who is sitting next to you. I will say that I do a lot of social work. Why would anybody hire me for that information, right? Sir, you are not joining any NGO. हाँ, तो they see, you have to always think from a interviewer's point of view कि भाई वो मेरे पीछे टाइम खराब कर रहा है अगर, तो क्यों कर रहा है. That person is very What he is demanding, that's we have to. तो आपके जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए दैट इज ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इंटरव्यूअर.
तो मान लिया जाए कि जो भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि भाई वो क्या काम करता है और मैं क्या जानता हूँ, उसमें दोनों के बीच में लाइन कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू जाने के लिए आपका जो इंट्रोडक्शन है, इट कैन नॉट बी अ सेम टेम्पलेट इंट्रोडक्शन दैट यू कैन यूज एंड रीयूज एंड कीप ऑन यूजिंग ऑल द टाइम. You have to tailor it or change it a little bit depending on whom you are going to talk to. ठीक है, तो आप अपना देखेंगे कि भाई मेरा I am a graduate, I have done my engineering from this college, I have done my graduation from this college, I have done my nursing course from this college, whatever it is, that is your part. Now then comes कि आपके इंट्रोडक्शन में दूसरा एलिमेंट है जो which is of use for this person, and there you will add some more data points कि भाई I have done these courses where I have learned about XYZ topics and my special interest is in this area. And जब आप special interest की बात कर रहे हो, that is when you are creating that interest for that person to listen to you. Where I have done XYZ research or I have found this thing and I always feel very excited about it and I certainly want to do more research in that field by working in a company like yours. तो यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि भाई मैं ये जानता हूँ, जानती हूँ, मेरे पास मेरा ये क्वालिफिकेशंस में मैंने ये चीजें की है और इसमें से ये फोकस्ड इंफॉर्मेशन है जो आपके काम क्या है, मैंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ उस पर और आई वांट टू डू मोर इन दैट फील्ड. दैट्स द रीजन व्हाई आई वांट टू जॉइन अ कंपनी लाइक योर्स वेयर आई कैन एनरिच माय नॉलेज एंड आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आई एम गोइंग टू जॉइन. ठीक है, सेम थिंग अंजलि जी और पिंकी जी, आप लोग भी जो जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, ठीक है, आपका आप यू सेड कि यू वांट टू गो इन द पैरामेडिकल फील्ड, राइट? या पिंकी जी ने कहा कि आई वांट टू गो इन द बीपीओ फील्ड. तो बीपीओ में या पैरामेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसमें आप किस चीज पे ज्यादा काम करना चाहते हो, कौन सा चीज आपके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, चाहे वो पीपल रिलेशन हो, चाहे वो लर्निंग द डोमेन हो, चाहे वो डूइंग समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट. उस चीज को आपके इंट्रोडक्शन में ऐड करना है कि हेलो आई एम दिस, आई दिस इज माय क्वालिफिकेशन, दे आर द फील्ड ऑफ माय इंटरेस्ट, दिस इज द ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन आई हैव डन and this is what I want to do in future where I see it aligning with your organization or the role that you are talking about. तो ये तीन सीक्वेंस है, आपका इंट्रोडक्शन, आपका ओवरऑल नॉलेज बेस और आपका फोकस एरिया. जो फोकस एरिया आपका इंटरव्यूअर के साथ में मैच करना चाहिए. Sir, overall knowledge base on specific field. देखिए, अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अभिषेक और स्वरूप ने बताया कि आई हैव आई एम डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम NIAMT and I'm in the final year. I have learned heat treatment, steel making, iron making, what not, right? तो उसमें आप 4-5 टॉपिक आप ऐड करोगे एंड आई हैव, तो आपके लिए जैसे पैरामेडिकल फील्ड में जिससे जो भी होता है कि नर्सिंग से रिलेटेड होता है या पीपल केयर होता है, जो हेल्थ केयर या लाइफ सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से जो नॉलेज चाहिए होता है, राइट? तो I have learned all these 5, 6, 7 things in your course, right? You're talking about a course which has happened for some time, right? तो उसमें से key topics जो है उसके बारे में बोलेंगे. However, during my course I have found these two fields or this particular field very interesting, where I want to contribute more for the society, for the company, or for myself, right? तो आप उसको एक बाउंड्री बना रहे हो कि भाई ये मेरा पूरा लैंडस्केप है, ये 10 चीजें मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ, उसमें से ये वाला मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला फील्ड है. ठीक है, और क्यों है उसके रिलेटेड में कुछ डेटा आप देंगे. जैसे मान लिया जाए यहाँ पे स्वरूप और अभिषेक जो बोल रहे थे आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, तो उसमें उनको कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा. भाई मैंने आयरन मेकिंग और स्टील मेकिंग में मैंने ये काम किया है, ये रिसर्च किया है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, एंड I have proven that I have extra skill in this space which I want to further enrich. तो उनको लगेगा कि अच्छा ये बंदा ऑलरेडी पका पकाया है, थोड़ा सा उसको आता है एक्स्ट्रा, तो उसको अगर सही रास्ता दिखाया तो मेरे लिए भी फायदा है, इसके लिए भी फायदा है. लेकिन सर अगर फ्रेशर हो, फिर फ्रेशर हो तो भी देखिए, आप फ्रेशर हो, अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आप जान लीजिए कि आपको या मुझे या किसी को भी कोई भी कंपनी एहसान करने के लिए जॉब नहीं देती है. They always look for कि मुझे क्या मिलने वाला है, कंपनी को क्या फायदा होने वाला है.
if they get an answer कि हाँ ठीक है, कोई fresher है, तो fresher है मतलब that is a young blood, okay? They will come with lot of energy, lot of positivity. Second thing is कि भाई इसका attitude कैसा है? Is this person, you know, very flexible? Is he or she going to do a very good job, showing a very positive attitude? How learnable that person is, मतलब उसकी learning ability कितनी अच्छी है, कितना जल्दी सीख सकता है कोई, कौन कितना fast learner है, right? Fourth thing that we look for is कि भाई आपके पास ऐसा कुछ evidence है कि जहां आपने कोई चीज पहले अब जैसे आप फ्रेशर हो, आप फ्रेशर बन के मान लिया अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ तो सीखा होगा, देन यू विल टॉक अबाउट कि हाँ मैंने जब ट्रेनिंग की थी, दी आर द थिंग दैट आई हैव लर्नड एंड आई हैव यू नो काइंड ऑफ फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और वहाँ जब मैं सीख रहा था या सीख रही थी तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें किया कि भाई लेट्स से आई लर्न अबाउट द रिटेल डोमेन ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग, सो आई फाउंड you know add to cart or order management is a very interesting field, और आपको उसके लिए 2-4 लाइन सोच के रखना पड़ेगा कि भाई वो फील्ड आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो क्यों है। तो तब क्या हो रहा है ना कि देखिए इंटरव्यू को अगर आप खुला छोड़ देंगे, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन एंड पीपल कैन लिटरली टेक यू फॉर राइड, आप खो जाओगे, नोबडी नोज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो आपको 1-2 फील्ड चूज करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, और आपको इंटरव्यूअर को खींच के उस डायरेक्शन में ले जाना है, आपको वहां तक पहुंचाना है उस बंदे को, बंदा हो या बंदी हो जो भी हो, ठीक है, कि भाई मेरा फील्ड इंटरेस्ट का फील्ड ये है, उसके बारे में मैं ये चीजें जानता हूँ, पूछना है तो कुछ पूछो, दैट्स योर मैसेज। ओके सर। और वो फील्ड जो है यू हैव टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च टू फाइंड आउट कि उनके लिए जो इंटरव्यूअर उसके लिए कौन सा फील्ड इंटरेस्टिंग है, उस फील्ड के बारे में आप क्या क्या नॉलेज जमा कर सकते हो, देन यू टॉक विद स्पेसिफिक कि भाई जैसे कि अभी यहाँ पे चूंकि अभिषेक और स्वरूप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे कि अभिषेक स्वरूप ने ये कहा कि आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं जानता हूँ जानती हूँ, तो दे हैव टू गिव सम मोर एविडेंस कि देखो इसमें इस डोमेन में मैंने ये काम किया है, आई हैव डन माय रिसर्च in this particular thing where I have looked at these parameters which helps me design this kind of a solution or this kind of a product which is more robust, more what you call cost efficient, whatever it is. तो आप लोग को थोड़ा वो स्पेसिफिक तक लेके जाना पड़ेगा कि भाई मैंने जो रिसर्च किया उसका पर्पस क्या था और मैंने क्या अचीव किया था, that you can sell convincingly. So let me stop here. So Abhishek and Swaroop, am I making sense here? Yes, sir. Of course, sir, you are making sense. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि always refrain from giving any subjective answer. I think my vision and my goal are aligned with your company's objective. Nobody buys in that idea. आपको वहां पे you have to say, I know that your company is working in these fields and I have deep interest and skill in this field where I have done XYZ things. तब देखेंगे जो डिस्कशन होगा ना, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, मोर मीनिंगफुल एंड मोर कन्विंसिंग आल्सो फॉर यू एंड इंटरव्यूअर बोथ, ठीक है। लाइकवाइज अभिषेक, जैसे आपने कहा कि आई एम अ फास्ट लर्नर, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, देन you can add more element to it by saying that yes, in today's world everybody does production, everybody has the infrastructure in place to make products, but where you differentiate with your peers is where you are able to make decisions based on the data, and since I'm good with data, it will help you make your decisions faster. I can help you do analysis of the data to make better and more efficient business decisions, which will help you get an edge over your competition. Yes, sir. तो उसमें आपको बेसिकली बोलना है कि भाई I have to add. हाँ, कि आप अगर मुझे पिक कर रहे हो तो आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ. That's what you have to convey. It is just like, sir, how you sold yourself. Correct. How better you can sold yourself. Yeah. So and never ever go to any interview being desperate कि भाई मेरे को ले लो, कोई नहीं लेगा. You have to go and tell that if you are hiring me, it is you who is getting benefited because of XYZ reasons. I mean, you don't have to say in as many words, but this is the message that you have to convey.
कि मुझे हायर करने के लिए 10 लोग लाइन लगा खड़ा है, आपको चाहिए तो बोलो, है ना? बिकॉज नो द टाइम यू शो दैट डेस्परेशन और विलिंगनेस और ईगरनेस कि हाँ भाई मेरे को ले लो, ये अच्छी कंपनी है, मेरा लाइफ बन जाएगा, कांड हो जाएगा उधर ही। अंजलि जी, पिंकी जी, आप लोग के लिए भी सेम चीज, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे आप ये मान के चलिए कि कोई भी इंटरव्यूअर आपके ऊपर उपकार ये करने के लिए आपको हायर नहीं करेगा। यू हैव टू शो दैट वैल्यू कि देखो मैंने ये चीज सीखा है, मेरे को ये चीज पता है, और मैं इस चीज को इतना जानता हूँ या जानती हूँ, और इसको इससे और आगे मैं ले जा सकती हूँ, प्रोवाइडेड आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, एंड दैट विल बेनिफिट माय कंपनी एंड इट विल आल्सो हेल्प मी एनरिच माय नॉलेज। नो 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 डिनाइंग दैट, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है आदमी, है ना? तो मेरा जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन था ना, उसमें देखेंगे आप कि दोनों में सेम पॉइंट था कि थोड़ा आंसर मुझे सब्जेक्टिव मिला, तो आई वाज ट्राइंग टू डबल क्लिक ऑन दैट कि अच्छा भाई इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो मेरी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है क्या, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिग आउट। और दूसरी चीज इंटरव्यू के बारे में, एक तो पहला बोला कि आप कभी भी डेस्परेट हो कि इंटरव्यू में जाएंगे कि भाई मेरे को हायर कर लो, नहीं करेगा कोई, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि don't give any subjective answer, be very point blank and be very specific कि हाँ मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, और ये चीज आपके काम में आएगा, ठीक है? दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज नो इंटरव्यूअर डज योर इंटरव्यू टू फेल यू, ओके? कोई भी इंटरव्यूअर किसी का दुश्मन नहीं होता है। इंटरव्यूअर का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेरे को अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाए, सो दे आस्क क्वेश्चंस टू dig information from you, find out more about you, ठीक है? तो इंटरव्यू आपको फेल करने के लिए नहीं बैठता है, इंटरव्यूअर आपको आपसे जानकारी निकालने के लिए बैठा होता है। सो डोंट हैव टू रश, डोंट हैव टू थिंक ऑफ दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन, दिस इज एन a platform and an opportunity for the interviewer to collect maximum information from you to draw that connection कि भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है और ये मेरे पास ये अवेलेबिलिटी है स्किल का, इज देयर अ मैच? इट्स अ मैच मेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है? तो इंटरव्यू का डर हमेशा निकाल दीजिए। कभी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक कि आप जो जानते हो वो नॉलेज इंटरव्यू के काम का है कि नहीं है, और दूसरा ये कि आप जो जानते हो आपने उसको सही तरीके से कम्युनिकेट किया कि नहीं किया। और जो बाकी मैंने बोला स्पेसिफिक्स के बारे में बोलना या अपना इंट्रोडक्शन को फाइन ट्यून करके इंप्रेसिव बनाना, थोड़ा रिसर्च करके जाना, that these are like the tricks which will help you, win that exercise. तो ये पहला इंटरव्यू सेशन था। आई नो it sounds overwhelming, it sounds very difficult or daunting task, like what Anjali ji told us, right? Daunting task है, लेकिन इसको it becomes easy if you do that in a more structured, more creative way with a decent amount of preparation. So one thing I want to add that, sir, like if I have to remember that you are running many coaching classes. That's in this frame I have to answer you because that's you are running an coaching center and different coaching. So I have to use that basis that you are running this type of company, and now I am that type of person that can help. Not really. I don't run coaching classes. I just guide No, kids. sir. Just like I have to think about this type of thing, like Right. because we don't know about the background, which type of company you are. हाँ, right. That's नहीं तो यहाँ पे we ये can- करेंगे ना कि सी देख यहाँ पे मतलब let me make it specific so that it is beneficial for you guys. Okay, so whenever we will do the next round of interviews, right, I will come as a recruiter from either an IT company or somebody who is running a foundry or food shop. ठीक है? I might not be a subject matter expert, but I can still interview people. IT वाला तो मैं कर ही सकता हूँ. That is where my core expertise is.
But quantity forging के लिए भी मैं I can give you tailored questions that will at least make you 70% ready for your interviews. बाकी आयरन कार्बन डायग्राम के ऊपर जो सवाल रहेगा वो उसके लिए आप लोग अलग से तैयारी कर लीजिएगा. एटलीस्ट इफ यू हैव दैट स्ट्रक्चर इन माइंड कि अगर कोई सवाल आ रहा है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, then I think you guys are more technically equipped than me after me being associated with this whole thing for the last 23 years. Yes, sir. लेकिन Yes, sir, yes, sir. if you catch that pattern, right, if you start articulating it keeping that perspective in mind, no matter whether you are giving the right answer or wrong answer, I might not be able to judge and say कि हाँ भाई ये आंसर गलत था, but if I see that pattern coming, in the right sequence, right, what do you call, right, with right content, right, तो then at least you would know कि हाँ ठीक है. आंसर्स आप लोग बाद में देख लेना, मतलब जो वीडियो में रहता है उसको देख लेना कि भाई मैंने ये आंसर दिया था वो सही था कि नहीं था. बीरेन सर तो नहीं बताया कुछ भी, लेकिन आपस में आप लोग इवैल्यूएट तो कर ही सकते हो, है ना. Sir, I want to know the answer of this question, that why do we hire you? So see, when an interviewer asks this question, right, to a interviewee, actually that's a question that he or she is posing for himself or herself. Ki why should I hire Swaroop? Why should I hire Abhishek? Why should I hire Anjali? Why should I hire Pinky? Right? They ask this question to themselves. And instead of trying to answer that question by themselves, they ask this question to the interviewee. कि भाई अब आप बताओ मुझे कि मैं आपको क्यों हायर करूं. And as soon as you give that right answer, right, that I know that your company is working in XYZ field. My interest is in this field, which is a hot cake where every company is competing with each other to gain an advantage against their peers. My skill in that particular area where I have already done some research will give you that advantage where we can work together to kind of make this company more successful. So अगर सीधा अगर हिंदी में बताऊं कि भाई मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो, मैंने उस फील्ड में ऑलरेडी रिसर्च किया है, थोड़ा काम किया है, and given the infrastructure that I'll get exposed to by working in your company, I can further do more research and make your company gain that advantage over the competition. तो उनको लगेगा अच्छा ठीक है, हाँ मेरा भी ये पेन पॉइंट है. अगर आज की डेट में देखा जाए, लेट्स से अगेन अंजलि जी और पिंकी जी, थोड़ा आप लोग को ओवरडोज लगेगा, बट जस्ट बेयर विथ मी फॉर 2 मिनट. अगर आप किसी फाउंड्री या फोर्जिंग कंपनी की बात करते हो, राइट, every company makes products, right? Now with Make in India move, a lot of orders are coming from different companies globally to India, right? उनको क्या करना है कि भाई उनको नए नए प्रोडक्ट्स पार्ट्स का ऑर्डर आएगा. अब हर एक प्रोडक्ट पार्ट जो आपकी कंपनी में आपकी असेंबली लाइन में बनता है वो तो ठीक है, जो नया है, what is the possibility of that product being solid and durable if you don't take all the design considerations into mind, right? अगर आपने कोई भी शेप का आपका ऑर्डर है कि ऐसा शेप का एक पार्ट बना दिया आपने विदाउट थिंकिंग कि कहाँ पे उसका हॉटस्पॉट बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा, कौन सा पार्ट में वेयर टियर ज्यादा होगा. अगर आप उसका एनालिसिस और डिजाइन नहीं करते हो, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, नो मैटर हाउ मेनी ऑर्डर्स यू गेट टुडे, टुमारो योर फ्यूचर इज ब्लैक, राइट? So every company is struggling with that kind of a problem. If you say that knowing the current global or global economic condition, kind of the production war that we are all heading for, every company has these 3, 4, 5 problems, and that's why I have done my research in these areas, and these are the findings that I have, which could be relevant to you and your company, and we can do more research together. So actually, I mean, if they ask about like what sets you apart from other candidates, so this kind of question if they ask. तो देखिए, किसी के पास कोई मैजिक वॉन्ड तो होता नहीं है. What sets you apart from other candidates is, one thing is obviously your attitude. Attitude is a very, very important part. Okay, your attitude towards work, that has to be one of the most important selling point. कि ठीक है, आपको काम करने की इच्छा कितनी है. लोग कंपनी में ज्वाइन करते हैं लेकिन कल को बैठ गए धरने पे कि काम नहीं करना है, तो आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए भाई कि यू शुड बी अलाइन टू कंपनी का गोल, यू शुड हैव द राइट एटीट्यूड कि हाँ भाई मेरे को मन लगा के काम करना है, अपना 100% देना है कंपनी को, राइट? दैट इज वन थिंग. सेकंड इज योर लर्नेबिलिटी. आप
बहुत सी चीजें जानते होंगे, बहुत सी चीजें आप नहीं जानते होंगे. What sets you apart is where you have the ability to learn faster and you have to showcase that कि भाई मुझे ये चीज पता थी और ये चीज मैं नहीं जानता था, तो मैंने ये इसको सीखा है. And you can give some example. ठीक है, it could be related to technology, it could be even something not related to technology, but as long as you showcase your ability to learn, that is done. Third thing is your awareness of the situation. Okay, हम लोग किताब पढ़ के बहुत कुछ नहीं जानते हैं, किताब पढ़ के उतना जानते हैं जितना किताब में लिखा हुआ है. ठीक है, how up to date you are with the happenings in your surrounding, how is the whole global economy shaping up, because every company, whether they will succeed or fail, depends on how prepared they are as an organization for the for the uh, for the global scenario, right? future. Correct. Yes, sir. तो आपका वो नॉलेज, हाउ डू यू पुट दीज थिंग्स टुगेदर कि आपका एटीट्यूड, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपका नो हाउ ऑफ द सिचुएशन, देन combine that with your technical knowledge. These 4 things, if you have all these 4 and you can sell it well, you are done deal. Okay, sir, I got it properly. और हर एक चीज में आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको ये 4 चीज के बारे में बोलना है. अगर ये तो जस्ट गिव सम एविडेंस एंड सम इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई मैंने इस पेज पे करना है, मैंने ये किया है, दिस इज व्हाट आई हैव डन, राइट? And then the last thing that that does the packaging of all is enterprising skill. How enterprising are you? अगर आप ये हमेशा सोचते हो कि ये प्रॉब्लम है, हाँ ये प्रॉब्लम, मतलब किसी ने कहा कि हाँ हमारे यहाँ जो कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हाँ प्रॉब्लम तो है, लोग काम नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल का सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है. अंजलि जी मान ली पैरामेडिकल फील्ड में जाएंगी तो बोलेंगे हाँ पेशेंट का आता है, बीमार रहता है, तबीयत खराब रहता है, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास तो लोग नहीं है. तो you can talk about 10 different problems, but that doesn't take you or the company anywhere or the organization anywhere. You have to think of how to survive against odds. कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स होता है, this is one solution, this is second solution, let's evaluate both of them and then we'll see which one works best. If you can give that kind of message, क्योंकि कहीं भी जाओ आप, चाहे पिंकी जी बीपीओ फील्ड में जाए, चाहे अंजलि जी पैरामेडिक में जाए, चाहे आप लोग आईटी में जाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओ, जहां भी जाओ, you will have problems. And how do you sail through those problem situations in a very creative way, in a very enterprising, with a very enterprising attitude, by taking the team along? That is what makes you and the organization succeed. तो आपको वो मैसेज देना है कि आपके अंदर वो एंटरप्राइजिंग स्किल कितनी है. आप लोग को ये जान के आश्चर्य होगा कि मैं निफ्ट में जब पढ़ाई कर रहा था तभी आई वाज आई थिंक 24th रैंक गाय आउट ऑफ 33 स्टूडेंट्स. मतलब जो सीजीपी होता है उसकी बात कर रहा हूँ. एंट्रेंस में जो था वो तो अलग था, बट सीजीपीए में सबसे आई वाज नॉट अ वेरी स्टूडियस गाय. मेरे को ज्यादा आलतू फालतू काम में ज्यादा मजा आता था. जिम खाना प्रेसिडेंट बनना है, तो प्लेसमेंट सेल का इंचार्ज बनना है, तो स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, तो उसमें ज्यादा मजा आता था. But the first company that came for campus, they picked me up. Since I was a placement cell in charge, they saw me, the whole activity that I did, right from picking them up from the airport to organizing everything, then to conducting interview, making sure everything was done in a sequential manner, in a more structured way. They found that okay, this guy is enterprising. They picked the rank 1 of my batch and me. There was no comparison between me and my rank 1. Okay. And interesting fact is, today also as we speak, my rank 1 is in Infosys. I'm also with Infosys. तो ये यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि I'm as good as my rank 1 guy in the class. I'm saying that sometimes these skills also makes you relevant to the organization. Excuse me, sir. बोलिए पिंकी जी. Sorry for interruption. बोलिए. Sir, actually, I have to go now. No, it's very late. I think we have to wrap up. So thank you so much, Pinky ji, for joining, and I hope Okay, कि sir. Thank you so much, sir. कुछ सीखा होगा आप लोगों ने. इसका वीडियो देखेंगे, Yes, sir. करेंगे तो कुछ शायद काम आए, है ना. अंजलि जी आपके लिए भी काफी लेट हो चुका है, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप ऑफ. स्वरूप एंड अभिषेक, आप लोग भी एग्जाम की तैयारी कीजिए. आई होप दिस मॉक इंटरव्यू वाज ऑफ सम मीनिंगफुल इंटेंट, और हम लोग इसको अगर अच्छा लगे तो हम लोग और भी करेंगे, 2-4 बार करेंगे, तो आप लोग को then you will probably find merit in what we are doing today.
I think that, sir, sometime you ask to us a rapid fire question little bit. 2 or 3, not a lot, but little bit. नहीं आप लोग का भी इंटरव्यू होगा, चिंता मत कीजिए, Okay, sir. सबका Okay, होगा, sir. ठीक है, चलिए गुड नाइट। क्योंकि सर अगर खुद से सिर्फ बोलना हो ना कि मतलब हाँ हमने अपने बारे में बताना है, मतलब माई सेल्फ बताना है, अपने स्टडी के बारे में बताना है, हॉबीज के बारे में बताना है, तो खुद से अगर हम जब स्पीक करते हैं ना सर तो हमें सोचना पड़ता है। लेकिन जब सामने वाला जब हमसे क्वेश्चन पुट करता है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ and tell me about your hobbies and about your study and other things, तो सर उसमें ना थोड़ा सा ना इंटरेस्ट आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सर अगर हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं ना तो आप बड़े अच्छे से हमें सजेशन दे सकती हैं। करेक्ट, नहीं वो करेंगे एक्चुअली, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, और देन व्हेन यू गो एंड अपीयर नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन you would be prepared, you'll be better prepared actually. Okay, yes sir, okay, yes sir. तो चलिए, आई होप कि एक्सरसाइज अच्छा रहा आप लोग को, समथिंग टू एनरिच योर करंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और yes. कुछ फीडबैक हो कि इसको और बेटर कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज वी विल डू दिस एक्सरसाइज मोर ऑफन फॉर यू गाइस, सो दैट आई मीन नॉट दैट एवरी वीक, बट बीच बीच में हम लोग कर लिया करेंगे, उससे आप लोग को जब नो इट विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू बी बेटर प्रिपेयर्ड, है ना। Abhishek, Swaroop, any closing comment from you guys? No, sir, I think I am done with this. You're done. Okay, Abhishek? No sir. Okay, ठीक है, चलिए तो फिर let's wrap it up for now, and आप लोग इस इंटरव्यू का जो भी था इसको बाद में देखिएगा एक बार, आई एम श्योर कि कुछ some more information you will find interesting for yourself, है ना, और बाद में भी करेंगे फिर। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Okay sir, Okay. bye, good night sir. बाय Okay, sir, good night. बाय। Okay, thank you, sir. Have a great day. थैंक यू, बाय। Thank you sir.